Good afternoon. Our class for today is for the topic for the paper Delhi through the ages. And within this, we are going to look at how the capital city of Delhi was established by the Sultans of Delhi, the rule whose rule begins in the 12th century. So we have spoken about in the previous few classes about the various cities of Delhi, the seven cities of Delhi, Kila Rai, Pithoda, and the Qutb Delhi, and after that, Siri is being established, Jahanpana is being established, and the capital of Shah Jahanabad. So we have spoken about various cities of Delhi which were established, during from 11th century onwards. The first definitely being, apart from the mythological, connection between Indraprastha and Delhi, the archaeological as far as the archaeological remains are concerned, the first archaeological remains are that of Lal Kot, which is referred to as Kila Rai Pithoda in the Persian accounts. So from there we move on to a time period wherein Delhi was attacked by Mahmud of Muhammad Guri and Mahmud of Ghazni, and this leads to the creation of the setting up of the slave dynasty in Delhi in the last decade of the 12th century. And from that time onwards, Delhi remained the capital of various dynasties which came and ruled India, parts of North India, majorly parts of North India. So Delhi was able to maintain its character as the capital city for a very long time. And after that, what happens is that so there are cities, various cities of Delhi which are established in various parts of where we live today. जो आज की दिल्ली है उसके अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी दिल्ली जो है वो एस्टैब्लिश होती हैं. And the earliest name for this region, as we have spoken about in the previous class, was Dhilika. तो धिलिका से जो धिलिका हरियाणा के पास थी, जिसके बारे में हमने इंस्क्रिप्शंस की भी बात करी. वी स्पोक अबाउट द इंस्क्रिप्शंस वी फाउंड फ्रॉम राजस्थान, वी स्पोक अबाउट द इंस्क्रिप्शंस वी फाउंड फ्रॉम सोनीपत, फ्रॉम नारायणा, एटसेट्रा. So today's story is going to be what happens to this Lal Kot of the Tomars and the Chauhans, the Chauhans who built the fort around where present day Qutub Minar is. So at that time there was no Qutub Minar and there were no archaeological sites. There was the architecture which we see today around Mehroli was not there. We were talking about the time which was before this architecture, before these architectural structures came up. And today we are going to go a little more forward, and we are going to talk about the establishment of how this Lal Kot was extended. It was pierced through. In fact, it wasn't really extended. The fortress, the Kila Rai Pithoda, the fortress was pierced. It was there were 13 gates which were made to it, and so that one could enter it, and that is where the old Delhi or the is established. The Qutb Delhi is established. Comes up, Quwwatul Islam Mosque comes up there. The Jami Mosque comes up there, and so this is what happens during the time period of the Mamluks, the slave dynasty, the first dynasty to rule during the first dynasty of the Delhi Sultanate, what is popularly known as the Delhi Sultanate. And Iltutmish definitely being the most important ruler, how the rule of Iltutmish and how there was an external problem which was going on, external development which was going on at that time, something that was not necessarily affecting India directly, but yes, there were indirect connections, and the direct direct connection comes a little later. What I'm referring to here is the expansion of the nomadic empire of Chinggis Khan.
and this is happening in the 12th century, 12th 13th century by Genghis Khan and his successors, who built a great empire ranging from present day China to the all the way till Europe, till Eastern Europe. So these are, I'm sorry, you'll have to excuse the noise in the background. There is a construction going on. Uh, okay, so these are, this is what happens during the time of Iltutmish. How the Mongol invasions, which are going on in the Mongol expansion, which was happening not in India but outside India, in Central Asia, how that affected developments in India. And after that, we are going to talk about the setting up of the capital of Siri by Alauddin Khilji. Alauddin Khilji was also one of the dynasties which ruled over Delhi, and Alauddin Khilji was one very important ruler. And so we are going to talk about Siri also in a little greater detail than what we spoke about in the previous class. And then we are going to move to the capital of Tughlaqabad, which is constructed by by the Tughlaqs, again the dynasty which rules over Delhi. Uh, so we'll start with the today's class. If you have any question remains, please ask it in the group. Please ask it in the Q&A section. And okay, I see that number of you have already asked questions. The book remains your SOL material, Bache. Apart from that, there are several other books which you can read. You may join the WhatsApp group, and I'll share the names of the books which you can read for this chapter. This Professor Sunil Kumar's work on the Delhi Sultanate and the expansion of Delhi during the Sultans of Delhi remains a very important work. Uh, he passed away very recently in January 2020, only few days back, and he has worked on Delhi during the Delhi Sultanate. So his book, and before that we were talking about the history of ancient Delhi, Lal Kot and Kila Rai Pithoda, and before that Indraprastha. So as far as the ancient Delhi is concerned, there is a book by Dr. Upender Singh, a very good book. The book itself is called as Ancient Delhi, in which she looks at, she traces the history, how Delhi has been an important site, important Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, whatever evidence we have got, and how there is a transition, how Delhi is growing. So Upender Singh's book on Ancient Delhi is important. Professor Sunil Kumar's work on medieval Delhi is again a very important. Apart from this, there are various other articles and books that you can read. Also, there is SOL material which is quite good, so you may look it up in the SOL material as well. Just give me one moment. This laptop is sliding down. Okay, I have shared the number for the WhatsApp group of this paper. Okay, so let's begin. We were talking about the story of Delhi. What happens, the changes which come in Delhi after the sultans come. So the settlement, Delhi has, the history of Delhi during the Sultanate period is the history from the 12th century till roughly around the 14th and the middle of the 15th century, let's say, or the 15th century. So 12th to, so it is this 350 years that we are talking about. And it was there was a battle of Terrain which happens in 1191, in which Prithviraj Chauhan is able to maintain his control over, is able to protect or not really protect, is able to retain his control over Delhi. But this is something which changes the very next year in 1192. There is an attack by the Turkish, by Muhammad Ghuri again in Delhi, and that is when Prithviraj Chauhan is defeated, and 1192 is the time when the Mamluk dynasty is established under the control of Kutubuddin Aibak.
who was the slave of Shahabuddin of Guri. And because he was the slave, he so Guri came, and Guri left India. He came, he plundered, and he left India, and he left one of his slaves, Kutubuddin Aibak, as the ruler of India. From That is the establishment of the Delhi Sultanate, the first dynasty, which is known as the Mamalok Dynasty and also known as the Slave Dynasty, because Qutbuddin Aibak was the slave of Muhammad Ghori. Now, the older city of Delhi that we have spoken about, whose traces still remain in the form of Lal Kot of the Tomars, which is also referred to as Kila Rai Pithora in the Persian accounts. So these remnants are still there in Delhi, and they can be found near the present-day Qutub Minar complex. So basically, the Sanjayvan area between JNU and Qutub Minar, that is the area wherein you can find the remnants of these fortress walls, which were constructed by the Chauhans and the Tomars before that. So basically, the Rajput clans. Um, so this is as I told you, that these walls, these fortress were pierced through by 13 gates, which were put into it by the Delhi Sultans, and one of the most important gates was the Badaun Gate. Now there was, within it, the this entire settlement, there were various. The fort that we are talking about, that of the Chauhans, the Kila Rai Pithora, this new capital of the Delhi Sultans is established within this court, very close to this fort. The capital, which will be called as Qutb Delhi, or Delhi-e Kuhna. Delhi-e Kuhna is the name which is given to this place, and which means the old Delhi. So अभी हम लोगों के लिए पुरानी दिल्ली क्या है? चांदनी चौक का और उसके आसपास का जो एरिया है, उसको हम पुरानी दिल्ली कहते हैं. पर जो सबसे पुरानी दिल्ली है, वो जो कुतुब मीनार का जो एरिया है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वो सबसे पुरानी दिल्ली. दैट वाज द ओल्ड दिल्ली. So these Gorians and the Turkish, they start building a lot of a lot of architectural structures around this place, and we have spoken about it in the previous class. They construct the Quwwatul Islam Mosque. There is the beginning of the construction of this huge tower, Qutub Minar, started by Qutbuddin Aibak, and which was later completed by Iltutmish. Now, Delhi had, right from the time of Tomars till the time of Chauhans, Tomars were defeated by the Chauhans, and initially, after the defeat, they were allowed to rule only a certain area of Delhi, but ultimately the power went to Chauhans. And after the defeat of Chauhans, the power goes to the Delhi Sultans. And during all this while, Delhi is growing as a capital, the population of Delhi is growing, and the growth tremendously increases when Delhi becomes the capital of this Turkish Empire, the Delhi Sultanate, which is established here. And the most important ruler, here we must keep in mind, is the Sultan of Delhi. He is, the Sultan Iltutmish, who is the most important ruler. He rules from 1211 to 1236, and then when he dies, he gives the power to rule, or the heir to the throne is his daughter, Razia Sultan. Though he had sons, but he did not give away his reign, his territory to his sons. He gives it to his daughter, Razia Sultan, who ruled for a very little time, who ruled for only a period of 4 years. But nonetheless, she did rule. She was one of the rulers of this Delhi Sultanate. Now, by the third, quarter of the 13th century, the time by which Balban is emerging as an important ruler, Balban becomes the ruler of under under the Delhi Sultanate. Delhi has expanded,
to a very great extent. It has become a mega city. It has also become let's say, cosmopolitan city in that sense. It definitely, it is not as cosmopolitan as Delhi today, or as cosmopolitan as maybe the cities like Agra under Akbar, or the Mughal court, But Delhi definitely was growing, and large number of people were coming to Delhi from various regions of Central Asia. Now, what were the reasons why these people were coming to Delhi, which was being ruled by the slave dynasty, which was being ruled by Iltutmish and his successors? The most important reason that I pointed out in the beginning is the Mongol invasions. The Mongols, Genghis Khan and his successors, are expanding their empire, which is known as the nomadic empire, and they are attacking various cities in Central Asia. And because these cities are being attacked and plundered and looted, etc., the entire aristocratic class, the entire professional class of these places have nowhere else to go, or rather they chose to come to Delhi because Delhi was growing at that time, and Delhi was becoming popular. So number of these artisans, a number of these artists and officers and people of various origins from these different cities which Genghis Khan and his successors are attacking, are now moving towards Delhi, because Delhi gave them a safe refuge. Delhi was a safe place for them to come and set and to live here. Uh, if before we talk about this further, it is important for us to remember that there are certain advantages which Delhi had as the capital. What were the geographical advantages which Delhi had? Uh, Delhi, this particular region of Kila Rai, Pithoda, and Qutub Minar, etc., is part of the hilly terrain, the Aravallis. This is where the old Aravali range is, and the Aravali range continues till the northern plains. So the way you have the present day, so these Aravallis, they extend right till the northern plains. And another important thing about Delhi is that it has a river, a navigable river, a river which can be navigated through and around the year. It is not like, it is not like a river which doesn't have enough water during the dry season, or it freezes during the cold season. So those problems are not there with Yamuna. Yamuna remains navigable throughout the year, and definitely as Yamuna, as we see it today, is much dirtier. It's almost like a drain, but we are responsible for that. Back then, Yamuna had, ample water. It had a lot of water, and it was a, a river in proximity gave was was advantageous in many ways. The army could move quickly, through the river. They could navigate through the river. The trade could flourish because things could come up to Delhi and go beyond. I mean, the commodities which were being produced, they could be sent to other regions through the river channels. Um, and also, the plains, the floodplains of Yamuna were very fertile. So Yamuna is definitely one very important thing. While there are these high mounds, high regions in Delhi, especially the Aravali ranges and the other places which give a view of the far. If you are standing on the hilltop, you can look at the far off distances, which helps which helps when we talk about the protection of the capital. So so there could be these soldiers who could be placed on top of these, wherever these hilltops were, and they could see an enemy approaching. So all these factors, geographical factors, were working in favor of Delhi for it to be set up as the capital. Also, not to miss the very important point that Delhi, the fact that this is the entire Aravali range, there is a lot of stone which is available in Delhi.
stone quarrying can happen. It can be used for construction activities, and that is also something which is which we must pay attention to when we talk about the development. Why Delhi is being chosen as the capital of by the Delhi Sultans. And it remains so for a very very long time. There an important work is that of M. Atar Ali. There is an article in which is called "The Capital of the Sultans, Delhi." So, in which he talks about how Delhi is the capital of the Sultanate which is established in Delhi. So apart from these geographical factors, that there is a river, there is a hilly terrain, there is northern alluvial soil till where Delhi extends, and also there's ridge. There is this heavily forested region, the ridge, which is there. So apart from all these geographical reasons, it was the Mongol pressure from outside which made, so Delhi was way inside, if you look at the territory of India at that time, so Delhi um, was quite far east for Genghis Khan to reach, because he would be coming via the Hindu Kush, and beyond the Hindu, he would be coming from the regions beyond the Hindu Kush mountains. So the Mongol pressure in that sense contributed very, very positively towards the emergence of Delhi as the prime center. So because the Mongols were attacking Central Asia, that is in a way, affecting the growth of Delhi. It is being, that is something which helps in the growth of Delhi. Now there were a large number of grants which were given by Iltutmish, for the those who were coming to Delhi. Iltutmish was very open to the idea of different people, coming to Delhi and making it its home. All these cities which I said that Genghis Khan is attacking, people from all these different regions, people who are learned, people who are skilled, people who know Arabic and Persian and different languages, they are coming into Delhi from all the different directions. And there is a medieval historian, a historian of the time, Minhaj. Minhaj writes that people from various parts of the world are coming to Delhi. It has become the place of retreat. It has become the place to rest for the learned people from various parts, for the virtuous people, for excellent people from various parts of the world. This is what Minhaj is saying about the Delhi during the time period of Iltutmish. Now, as I said, that the factor which was responsible for this was Genghis Khan, who was expanding his empire, and he was attacking cities like Khurasan, he was attacking cities like Nishapur, like Herat, like Shiraz. So he is attacking all these cities, and all driving all these learned people out from these cities, and all these people are now flowing into the court of Iltutmish to find refuge. And this also helps in the in making the culture of Delhi more composite. It helps in uh, it helps in making Delhi a distinguished center of culture, of art, so much so that Delhi emerged as the safest place in the Islamic East. So if we talk about Islam over the world at this time, uh, one moment. Okay. So if we talk about Islam at this moment, so if we talk about the eastern part of the world, Delhi was the most important city and the safest city, where people from various origins, of various likings, of various calibers could come and find a place, where they could live. Now, there is another important work known as Tabakat-e-Nasiri. Tabakat-e-Nasiri is a work by Juzjani. And in that work, he says that Delhi fast became the refuge of those in Khurasan and Central Asia
people like, who were these people who were coming from Khurasan and Central Asia? These are people who are soldiers, these are people who are scholars, these are people who are craftsmen, these are people who are artists. So a number of medieval historians, people who are writing in at that time, are recording how the people from these different regions are coming to Delhi and making Delhi its home. And why are they coming to Delhi? They are coming to Delhi because of this Mongol terror which is there. Because the Mongols are attacking their cities, they are running away from those cities and coming to India. And also the policy which is adopted by Iltutmish. Now, had Iltutmish been a ruler who would have said that, no, if Genghis Khan and his successors and his commanders are attacking your cities, so be it. Why are you coming to Delhi? But that is not how he reacted to the entire situation. He encouraged, he followed a policy in which he encouraged these people to come and settle in Delhi, and this helped in the in making Delhi the mega city that it becomes in the Islamic East. And that this is how Delhi grows in the 13th century, largely due to the people from these Central Asian countries coming to India. So it wasn't people from, it was not so much people from South India or people from Eastern India or people from, various parts or Sri Lanka or Indonesia which are coming in. It is people who are coming in from Central Asia because of the Mongol invasions. And Delhi is not, does not only develops as an administrative center because Iltutmish is there, and that it is from this part of Delhi that he's, is controlling his empire in India. It definitely is an important administrative center. It also becomes an important commercial center, and Delhi is this part of Delhi. When I'm saying Delhi, 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 please keep in mind that I am talking about Qutb Delhi. At this time, ये पूरी दिल्ली की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ कुतुब दिल्ली की बात हो रही है, जिसको दिल्ली एक कुहना कहा गया, जिसको ओल्ड दिल्ली कहा गया, जिसको शहर कहेंगे। वो इतनी ज्यादा डेवलप्ड हो गई थी कि जैसे अब हम जो शब्द है जो उसको शहर हम बोलते हैं, तो शहर इज एनी सिटी। गांव में लोग बोलते हैं हम शहर जा रहे हैं सामान लाने, तो एनी सिटी इज नोन एज इट। पर दिल्ली इतनी बड़ी सिटी थी और एक मेगा सिटी बन गई थी कि अगर उस समय पे कोई बोलता था हम शहर जा रहे हैं, so that obviously meant that we are going to कुतुब दिल्ली, जो मेहरौली और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जहां पर कुतुब मीनार है और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, और वहां पर जो बाजार है, वो जो मंडी है मेहरौली में, वो आज भी वहां पर मंडियां हैं, सब्जी की मंडी है और ग्रेन मार्केट है एक्सेट्रा। वो इतने समय पहले, कई 100 साल पहले की, वी आर टॉकिंग अबाउट द 12th एंड द 13th सेंचुरी। इवन देन 13वीं शताब्दी में, आज से कितने साल पहले की बात हो गई, 700-800 साल पहले, 700-800 साल पहले भी जो ग्रेन मंडी थी, जो अनाज की मंडी थी, वो मेहरौली में ही थी। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी जब सिरी की कैपिटल बनाएंगे, एंड आई एम कमिंग टू सिरी, सो इवन देन उन्होंने एक नई कैपिटल बना दी जो इस कुतुब दिल्ली के बाहर है। दिस इज वेयर द प्रेजेंट डे रीजन ऑफ शाहपुर जट एंड सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम इज, जो सिरी की हम बात करेंगे। बट तब भी जो शहर था, जो कुतुब दिल्ली थी, उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई थी। अनाज मंडी अभी भी कुतुब दिल्ली में ही थी। जो मस्जिद है, जो जामी मस्जिद है, अलाउद्दीन खिलजी जामी मस्जिद अपने इस जो कैपिटल उन्होंने बनाया है सिरी, वहां पर मस्जिद बनवाने की जगह जो ऑलरेडी मस्जिद था कुतुब दिल्ली में, उसको उन्होंने एक्सपैंड किया, एक्सटेंड किया। सो दिस शोज दैट Qutb Delhi is going to retain its importance and it's going to remain an important city despite other cities, other Delhis, which will be established in different parts of near Qutb Delhi. So ये जो कुतुब दिल्ली है, इसकी इंपॉर्टेंस बनी रही। जो नई दिल्ली है उनके आसपास बन गई, जहांपना बन गया, सिरी बन गया, तुगलकाबाद बन गया, तो ये सारी दिल्लियां जो हैं ये बसती रहेंगी। पर वो जो अभी भी इंपॉर्टेंट दिल्ली थी, वो Qutb Delhi thi. Okay, now we come to the time of the Khiljis and we speak about this capital which was established by Alauddin Khilji, a capital which was known as Siri. Siri जो है वो आज का present day region, the Director General, the first Director General of Archaeological Survey of India,
Alexander Cunningham, he also points out, वो बताते हैं कि ये जो सिरी है ये किस रीजन में थी। तो ये रफली जो आज प्रेजेंट डे दिल्ली में एक विलेज है साउथ दिल्ली में जिसका नाम है शाहपुर जट। सो शाहपुर जट का जो रीजन है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जहाँ पे श्री फोर्ट ऑडिटोरियम है, जहाँ पे गार्गी कॉलेज है, जहाँ पे कमला नेहरू कॉलेज है, सो ये जो पूरा जो रीजन है ये सिरी कैपिटल के अंडर आता था। तो ये जो कैपिटल है ये कहाँ पर है? ये अगर कुतुब दिल्ली से देखेंगे तो कुतुब दिल्ली के ये नॉर्थ ईस्ट में है। और अगर किलोखरी से देखेंगे, जो घियासपुर की हमने बात की थी कि कैसे घियासपुर एक सबर्ब बन गया, उसके जो है ये साउथ में पड़ता है। सो बिटवीन दिस घियासपुर एंड किलोखरी एंड द घियासपुर किलोखरी एंड द कुतुब दिल्ली which is established, this is where the new capital of Siri is going to be established. Just give me 1 minute. Ma'am, I'll call you back. Okay. So this is where the capital of Siri is established by Alauddin Khilji. And so Alauddin Khilji becomes the ruler of India from not of India. He's the one who is the next important ruler to rule the Delhi and its surrounding regions. The next important ruler as far as the Delhi Sultanate is concerned. So he is ruling from 1296 till 1316. So 1296 से लेकर 1316 तक जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रूल करेंगे दिल्ली सल्तनत के ऊपर। और ये जो टाइम है ये एक ऐसा टाइम है कि वो जो परेशानी थी चेंगिस खान की, जो अभी तक दूर थी, अब वो परेशानी धीरे धीरे और नजदीक आ रही है। और मंगोल्स का जो है अटैक जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये जो टर्म है मंगोल, इट इज वेरी सिमिलर टू द टर्म मुगल्स। एंड व्हाई इज इट सिमिलर? बिकॉज जो मुगल बादशाह थे, जो बाबर थे, वो चेंगिस खान की ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो चेंगिस खान है उसके वो बाबर अपनी मदर की साइड से चेंगिस खान की फैमिली से रिलेटेड थे। सो बाबर्स मदर वाज वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ चेंगिस खान। हेंस द नेम मुगल्स। तो ये जो मुगल नाम है जिनको अब हम मुगल्स बोलते हैं, उस समय पे वो अपने आप को खुद को मुगल नहीं बोलते थे। बादशाह बाबर और अकबर etc. never called themselves as Mughals. We call them as Mughals, and this term Mughal is coming from the Mongol, the term Mongol. तो ये जो मंगोल हैं, चिंगिस खान है और उनके अब उनके जो सक्सेसर्स हैं, वो धीरे धीरे वो इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे। और इंडिया पे जो अटैक्स थे मंगोल्स के, और जो फियर था कि वो अटैक करेंगे, वो और ज्यादा नजदीक आता जा रहा था। एंड दैट इज द रीजन व्हाई this new capital is established by Alauddin Khilji in the region of Siri. Also, जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान नहीं थे, उससे पहले जब उन्होंने अटैक किया, सो ये जो रीजन था, ये एक ये रीजन एक जो सिरी का जो रीजन है, ये एक वेस्ट लैंड था। तो जब वो सबसे पहले आए तो उनकी आर्मी आकर वहीं पे रुकी थी। तो इसलिए उसको लश्कर भी कहा गया, लश्कर गाह भी कहा गया। ठीक है। तो मतलब initially when Alauddin Khilji came and he was trying to attack the old Delhi, the Qutb Delhi, and he was trying to become the Sultan of Delhi, that is the time when this his army is established in this region which is a wasteland. And that is the reason why this part is called as लश्कर। लश्कर जो शब्द है ये आर्मी के लिए यूज होता है। तो लश्कर गाह भी कहा गया, a place where the army is staying, and from that it becomes the दारुल खलीफा। दारुल खलीफा मतलब जहाँ पे जो खलीफा का जो घर है। सो वहां से वहां तक का जो ट्रांजिशन है, that is what we are going to that is what I'm going to talk about now. I'll take a small 30 seconds, 1 minute break and look at your questions because I've been talking for a very long time. Okay, I'll do one thing. I'll try and share the link of the WhatsApp group here. Just give me a moment. Any other question? अगर अभी तक जिसके बारे में हमने बात की है उसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो you guys may ask and I'll explain that before I move on to Siri and before I move on to
Tughlaqabad very quickly. I've shared the link of the WhatsApp group announcement में देखिए जो वहां पे मैंने WhatsApp ग्रुप का लिंक शेयर किया है, तो आप में से जो भी बच्चे हैं जो उस ग्रुप में नहीं हैं वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके WhatsApp ग्रुप में ऐड हो सकते हैं. Any other question which has come? The Mongols were not encouraging people to come to Delhi. Mongols encourage नहीं कर रहे हैं. एनकरेज इल्तुतमिश कर रहा है, जो दिल्ली का सुल्तान है वो एनकरेज कर रहा है कि भैया अगर आप आ रहे हैं तो ठीक है आ जाइए. वो मना भी कर सकता था, आप क्यों आ रहे हैं, यू नो, दिल्ली, व्हाई आर यू कमिंग टू दिल्ली? सो इल्तुतमिश कुड से नो. The Mongols are not encouraging anybody. The Mongols in Central Asia are attacking these various cities like Herat, like Shiraz, like Khorasan. So वो जा जाके इन सेंट्रल एशिया की सिटीज पे अटैक कर रहे हैं. इंडिया के बाहर है मंगोल्स, अभी तक हिंदुस्तान में नहीं आए हैं. ठीक है, तो चेंगिस खान और जो उनके कमांडर्स हैं वो इंडिया के बाहर है, सेंट्रल एशिया में है, वहां की सिटीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं. और जब सिटीज को अटैक कर रहे हैं, उनको प्लंडर कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, तो वहां के जो लोग हैं उनको कहीं तो जाना पड़ेगा ना अपने आप को बचाने के लिए. सो दोज पीपल आर कमिंग टू दिल्ली क्योंकि यहाँ पर मतलब सेफ्टी है, आराम से रह सकते हैं, राजा भी अच्छा है, मना नहीं कर रहा है आने के लिए तो आने दे रहा है. और सो ऑल दीज बेनिफिट्स, और मार्केट भी अच्छी है, घर भी मिल जाएगा रहने के लिए. सो इसीलिए ये सब लोग दिल्ली आ रहे हैं. मंगोल्स ने उनको अटैक एनकरेज नहीं किया, मंगोल्स ने उनको अटैक किया और वो बच के भाग के दिल्ली आ गए. क्योंकि दिल्ली का नाम सुना था कि कोई शहर है, शहर नाम की जगह है जहां पर जा सकते हैं. दिल्ली एक नाम की जगह है जहां पर हम जा सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज पीपल आर कमिंग टू दिल्ली एंड व्हेन दे वर कमिंग दिल्ली, इल्तुतमिश वाज वेरी वेरी सपोर्टिव एंड ही एनकरेज दैट यू नो यू प्लीज कम एंड सेटल. ऐसे ही बसाया जाता है शहर कि आप आइए, और यू नो ऐसे ही शहर बढ़ते हैं. तुगलक की अभी हम बात करेंगे. तुगलक में घियासुद्दीन तुगलक हैं, तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक हैं, फिरोज तुगलक हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट तुगलक. आई हैवंट रीच्ड तुगलक. अभी तो हम खिलजीज के बारे में बात करेंगे जो सिरी उन्होंने कैपिटल बनाया. सो खिलजीज कम बिफोर तुगलक्स एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट देम फर्स्ट. द पर्टिकुलर रीजन विच इज रेफर्ड टू एज ओल्ड दिल्ली इज द कुतुब दिल्ली. ये सभी नाम जो हैं, कुतुब दिल्ली हो, ओल्ड दिल्ली हो, शहर हो, ये वो रीजन है प्रेजेंट डे दिल्ली का जहां पर कुतुब मीनार है, कुवतुल इस्लाम मॉस्क है, जामी मस्जिद है. दैट इज द एरिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे. अभी दिल्ली सिर्फ उतनी है, अभी ये बाकी की एरिया बढ़ेंगे. यू नो ये जो बाकी के एरिया जो हम दिल्ली में आज जानते हैं, श्री फोर्ट है, श्री फोर्ट तक अभी हम पहुंचे हैं, तो ये पूरी दिल्ली धीरे 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 बढ़ेगी. और ये सारे जो शहर हैं, लाजपत नगर है और पटेल नगर है, ये सब तो बहुत बाद में आएंगे. तो अभी हमारी जो दिल्ली है, इस पेपर में हम दिल्ली के बर्थ से उसकी बात कर रहे हैं, उसके जवान होने की, बूढ़े होने की बात करें. सो वी हैव ओनली बीन एबल टू रीच the city till now and Alauddin's time. A big city is good. It helps in trade. It helps in developing trade. It helps in developing the culture. Okay, now I'll come back to the questions in the end. I want to go back to the to Siri that we were talking about. So I was telling you how Siri is basically a wasteland which lies, and उस समय पर वो एक wasteland था. और you know it was a raised land, and it lied between the Ghiaspur Kilokhari and also between the Qutb Delhi that was there, that was already there. And the first thing which happens is, you know, the सबसे पहली चीज जो होती है यहाँ पर ये होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब आते हैं तो उनकी जो आर्मी है वो आकर यहाँ पर अपना बेस सेटअप करती है. So Siri in that sense was the imperial camp. It was the camp of the army, you know, of the army of Alauddin Khilji. And why is this? What are the main factors which are responsible for the coming up of this new capital in Delhi, which is Siri? The reasons were the Chagatai Turks. दो अब चेंगिस खान के जो सक्सेसर्स हैं उनमें से एक जो उनकी ब्रांच है, एक बेटे वाली ब्रांच जो है वो चगतई हो गई, और अलग अलग उनके चार बेटे थे तो अलग अलग चारों ब्रांचेस बढ़ गई, और वो आगे जो है नोमैडिक एम्पायर का एक्सपेंशन चलता रहा. तो उगतई एंड चगतई टर्क्स जो थे वो एक्सपैंड कर रहे थे और इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे थे. और उनका जो लीडर था कैदू, वो इंडिया को बार बार अटैक कर रहा था. डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया वर बीइंग अटैक्ड, एंड
suddenly it seems that India came into a striking range of the Mongols, कि वो एक ऐसा हो गया कि मतलब अब आसानी से इंडिया पे अटैक किया जा सकता था, इतनी आगे तक मंगोल्स जो थे वो पहुंच गए थे। और दिल्ली पे और दुआब का जो रीजन है, जो गंगा और जमुना का जो दुआब है, प्रेजेंट डे जो यूपी है, जो टेरिटरीज हैं, तो गंगा नदी तक है। एंड व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम दैट साइड, यू आर कमिंग फ्रॉम हिंदू कुश एंड फ्रॉम हरियाणा, पंजाब, तो गंगा और यमुना का और जो यूपी का जो क्षेत्र है वो बहुत आगे पड़ता है। तो वहां तक जो रीजन है वो मंगोल्स की रेंज में अटैक में आ गया। एंड दे अटैक्ड इंडिया ट्वाइस, they attacked the attack came twice, and it was necessary, it became almost necessary by this time to protect the city and its surrounding areas from these attacks. So it became absolutely necessary to keep the population of Delhi safe. And how could the population of Delhi be kept safe at that time? It could be kept safe by making a fort around it, by making a fort wall around it. And also the fact that Delhi had this entire region had rocks, and Aravallis were there. It was an ideal option कि सिरी के से अगर आगे का अब जो रीजन देखें तो वो पूरे अरावली के, अब तो नहीं है, अब तो साकेत है और ये सब जो रीजन है, बट जहां पर पहले सारा अरावली रेंज था। तो सिरी जो है वो अलाउद्दीन का हेडक्वार्टर भी रहा। जब जब मंगोल्स ने अटैक किया, सो सिरी वाज द हेडक्वार्टर, and he decided to build a wall around it. And it was also the place of residence of Alauddin Khilji, and also his successor Qutbuddin Mubarak. There is a medieval historian of that time. His name was Ziauddin Barni. बरनी जो है, उन्होंने किताब लिखी अपनी, जिसका नाम था तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही में बरनी ये बोलते हैं that the terror of Mongol became all pervasive। तो जो टेरर था मंगोल्स का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। The Mongol horsemen began to reach the platform of the Shubhani। तो वो दिल्ली के आसपास के जो गांव है वहां तक अटैक करने लगे। They attacked the शमसी तालाब। शमसी तालाब जो है वो मेहरौली में है। अब if you enter Mehroli from the if you try to get inside Mehroli from the Andheriya mode in Chhatarpur side, that is where the Shamsi Talab is, and it's a reservoir. It was also known as Hauze Sultani or Hauze Shamsi। सो वहां तक जो है वहां तक इन्वेजन हो रहा है। एंड अलाउद्दीन खिलजी, because the Mongols started reaching and making inroads in such internal parts of Delhi, he decided that it was important for him to build a capital, and it was important for him to protect the capital with a wall. And this is the time when Alauddin Khilji designates Siri as his capital, and the capital, which is known as Darul Khalifa। तो पहले वो लश्कर थी। अभी बात करते हैं, सबसे पहले तो वेस्ट लैंड थी। जो हमारे सोर्सेज हैं उस टाइम के, वो बताते हैं कि कैसे एक प्लेन वेस्ट लैंड थी जिसको सहरा कहा गया। सहरा कहा जाता है क्योंकि उसमें कुछ नहीं था, वो वेस्ट लैंड थी। और उसके आसपास क्या थी? उसके आसपास उसके पास ओल्ड दिल्ली थी। ओल्ड दिल्ली मतलब चांदनी चौक वाली दिल्ली नहीं, उसके आसपास जो ओल्ड दिल्ली थी वो कुतुब दिल्ली थी। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसे मैंने बताया, अपनी जो आर्मी थी उसको लाके यहाँ पर रखा था, जो कि उस पुरानी दिल्ली से, कुतुब मीनार से बाहर थी। And this is the time when he was trying to establish his control, and it was in the region of region of Siri that he had first established himself. And then from this wasteland it becomes into a lashkar, and then it becomes into a दारुल खलीफा, कि जहां पर खलीफा रहता है, वो अपना पैलेस बनवाएंगे सिटी के, सिरी के जस्ट बाहर। Now the location of this place is very, very important। I told you that Cunningham, Alexander Cunningham also identified कि जो ये सिरी जो कैपिटल रहा होगा, अलाउद्दीन खिलजी की जो कैपिटल रही होगी, जो सिरी जिसके रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं, ये शाहपुर जट के रीजन के अराउंड मिले होंगे। शाहपुर जट which is the present day village in South Delhi। And he says that this is the region। अगर हम सारे descriptions पढ़ें सिरी के, Cunningham is saying कि अगर हम दिल्ली के, सिरी के
सिरी के अगर हम सारे डिस्क्रिप्शंस पढ़ें तो और उससे अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि ये रीजन कहाँ पर होगा, तो ये रीजन जो है ये शाहपुर जट के आसपास ही होगा. So it was, it was away from, it was between Qutb Delhi, and it was between Qutb Delhi and Kilokari, and it was a huge area. And another thing which I've also mentioned in the previous class is that this city is circular. It was not rectangular as the previous capitals were. तो ये इसका जो आकार था इस कैपिटल का, न्यू कैपिटल का, जो सिरी कैपिटल एस्टैब्लिश हो रही है, इसका आकार जो था ये गोल था, गोलाकार थी ये. तो अब जो सिरी है वो क्या बन गई है, वो जो सिरी थी वो लश्कर थी, लश्करगाह थी. और शहर क्या था, शहर था जो कुतुब मीनार के आसपास का रीजन है. And this can be seen, is this this can also be found from the by two different facts. बच्चे प्लीज आप क्लास में कोशिश कीजिए कि जो यहाँ बोला जा रहा है वहां से नोट्स लिए जाएं, और यहाँ पर बाकी बच्चों को मैसेज करना कि नोट्स दे दो, और व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना नोट्स दे दो. सो किसी ने कोर्स पहले से नहीं किया हुआ कि उनके पास नोट्स अवेलेबल होंगे. सो आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस इन द ग्रुप, एंड इट सो दैट द क्लास में बी इफेक्टिव. आप थोड़ा सा पढ़ के आइए, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बेसिस पे कोई सवाल है तो वो पूछिए. रेडीमेड नोट्स तो नहीं मिलेंगे बच्चे, ठीक है? मेरे पास भी नहीं मिलेंगे और किसी के पास भी नहीं मिलेंगे. एसएल का मटेरियल है, किताबें मिल जाएंगी. अगर आपको किताबों के नाम जानना है, मैं बहुत सारी किताबों के नाम बता दूंगा. सो प्लीज डोंट आस्क सच क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन इन द ग्रुप. ओके, so as I was saying that the fact that the settlement of Siri was located between Qutb and Kilokhari is borne out by two facts. One, Nizamuddin is making जो निजामुद्दीन की दरगाह है, there is a region called Nizamuddin in Delhi. वहां पर निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह है. तो उनका एक कमेंट था that the distance between the शहर and the लश्कर जो वो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है. उनके एक डिसाइपल थे अमीर हसन सिजजी. अमीर हसन सिजजी was a disciple of निजामुद्दीन चिश्ती. उन्होंने उनकी बातों को, जो भी वो बोलते थे निजामुद्दीन चिश्ती, उनको रिकॉर्ड किया है. वो उनके डिसाइपल भी थे और एक आर्मी में ऑफिसर भी थे. So he was also an army officer. He was also a disciple of Nizamuddin Chishti, and he is making Nizamuddin Aulia. Sorry. So he is recording the comments of his master, of his Murshid, and all this is recorded in a text called Fawed ul Fuad. फवेद उल फुआद में उन्होंने अपने जो मास्टर हैं, जो सेंट हैं निजामुद्दीन, उनकी सारी चीजों को रिकॉर्ड किया. दूसरा जो एविडेंस हमें मिलता है वो यही जो है अमीर हसन सिजजी जो हैं, वो जो खुद एक आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने इसी लश्कर में अपना घर बनाया था. और और वो जो नमाज पढ़ने वो किलोखरी जाते थे, बट हिज हाउस वाज लोकेटेड इन दिस रीजन ओनली. सो दिस वाज बेसिकली अ रीजन व्हिच वाज सेट अप फॉर द आर्मी. सो जो लश्कर गाह था, जो वो सिरी जो थी वो पहले एक लश्कर गाह थी, फिर वहां से वो दारुल खलीफा बन गई. और ये जो फैक्ट है, ये कई उस समय के, जैसे अभी मैंने बात की अमीर हसन सिजजी की, उनके अलावा कई ऐसे और ट्रैवलर्स जैसे इब्न बतूता हैं, और जो और मिडिवल हिस्टोरियंस हैं, 14th सेंचुरी हिस्टोरियंस हैं, यजदी, वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको. तो कई सारे जो मिडिवल अकाउंट्स हैं उनमें ये चीज देखने को मिलती है. लाइक द अरब ट्रैवलर इब्न बतूता इज मेंशनिंग, इब्न बतूता की जो किताब है उसका नाम रिहला है. तो रिहला में ये बात मेंशन होती है. ये बात तारीख फिरोज शाही जो है, जो हमने बात की, जो मैंने पहले भी जिसको मेंशन किया था, जियाउद्दीन बर्नी की किताब है, उसमें ये बात मेंशन होती है सिरी के बारे में. यस्दी जो है, जो कि 14th सेंचुरी हिस्टोरियन है, वो he talks about the location of Siri. So all these people
Ibn Battuta in Rihla, Yazdi, who is a 14th century historian, Ziauddin Barni, all these people, Ziauddin Barni has written the account Tariq-e-Firoz Shahi. All these people are talking about the location of सिरी कि जो सिरी है वो कहाँ पर है, और वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जो शहर है जो बसाया गया है, ये जो जगह है जो बसाई गई है जिसका नाम सिरी है, कहाँ पर है। एंड यजदी की किताब है जफरनामा। तो जफरनामा में ये लिख रहे हैं कि वो जहापना के नॉर्थ वेस्ट में है, और कुतुब दिल्ली से या दिल्ली एक कुहना से वो साउथ वेस्ट में है। So they are all giving the location of where this Delhi is. And he also talks about, Yazdi is also saying how Siri is circular. वो जो है वो गोलाकार है। So वो बाकी दिल्ली की तरह, बाकी जो दिल्ली के जो शहर थे उनकी तरह rectangular नहीं है. It is circular. And another very important thing which you guys may have heard about, हौस खास, साउथ दिल्ली का एक रीजन है। हौस खास विलेज के बारे में सुना होगा। हौस खास विलेज, अब तो वहां पे सारे कैफेज और बार्स एटसेट्रा खुल गए हैं, पर हौस खास विलेज इज अ वेरी ओल्ड विलेज, और उसके पास एक हौस खास लेक है जिसको हौजे इलाई भी बोला जाता है। तो उसके पीछे ही अगर आप हौस खास विलेज के किसी उस रेस्टोरेंट में, उस बार में या किसी कैफे वैफे में गए होंगे तो आप देख सकते हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ा सा लेक है जो आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सो दैट दिस हौज खास जो नाम है वहीं से आया है। हौजे खास या हौज ए इलाई साउथ दिल्ली का रीजन है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दिल्ली की जो रिक्वायरमेंट थी पानी की उसके लिए बनवाया था। हम कौन कौन सी दिल्ली की पानी की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं? सी की भी और कुतुब दिल्ली की भी। कुतुब दिल्ली भी कहाँ पर है? रॉकी टेरेन में है, तो वहां पर ज्यादा पानी उपलब्ध नहीं है। सो ये जो दिस हौजे इलाही जो बनाया गया, जो रिजर्वायर बनाया गया, ये कुतुब दिल्ली से 2 मील की दूरी पे था। सो कुतुब मीनार से अगर आप सीधा आएंगे तो बीच में अर्चिनी विलेज पड़ेगा, लाडू सराय पड़ेगा, अर्चिनी पड़ेगा, और फिर हौज खास का एरिया आता है, और सिरी से भी बहुत नजदीक है। सो तो ये जो हौजे इलाही है, ये दोनों ही सिटीज के वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बनवाया गया। और यजदी जो है, यजदी कहते हैं कि ये एक दरियाचाह है। दरियाचाह मींस अ स्मॉल स्मॉल दरिया, एक छोटा सा समुद्र है। सो वो इतना बड़ा था, और वो कैसे रेनी सीजन में जो है वो पूरा का पूरा भर जाता है, और वो पूरी दिल्ली की जो है, उस समय की पूरी दिल्ली मतलब सिरी और कुतुब दिल्ली, उस पूरी दिल्ली की कैसे जो है वो प्यास जो है वो बुझाता है। इट हाउ इट हेल्प्स इन मीटिंग द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एंटायर रीजन। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, जो है वो सिरी की हमने बात कर ली कि वो कैसे दारुल खलीफा बन जाता है। इट इज even though Siri was established, as I've said before also, and I'm just concluding, I will talk about the Tughlaqs and Tughlaqabad in the next class maybe. Even though Siri is established, as I told you, शहर और ओल्ड दिल्ली और कुतुब दिल्ली, जिसको तीनों एक ही जगह के नाम है, ओल्ड दिल्ली से कंफ्यूज नहीं होना है कि चलो हम चांदनी चौक पहुंच जाए, वहां नहीं जाना है। अभी ओल्ड दिल्ली जो है यहीं पे है, चांदनी चौक तो अभी बहुत बाद में बनेगा, 400-500 साल, 400-500 तो नहीं, 300 साल बाद बनेगा, जब शाहजहां उसको बनवाएंगे और उनकी बेटी जो है जहानारा वो मार्केट प्लेस को डिजाइन करवाएंगे। सो दैट चांदनी चौक दिल्ली इज गोइंग टू कम मच लेटर। राइट नाउ वी हैव ओनली रीच्ड द बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी। हम 1296 से लेकर 1316 तक की बात कर रहे हैं। तो ये जो टाइम था, सिरी बेशक बन गया हो, कुतुब दिल्ली की शहर की इंपॉर्टेंस बनी रही। जो उन्होंने नया मॉस्क बनवाने की जगह जो पुराना मॉस्क था, जो जामी मस्जिद था, उसी को बड़ा करवाया, क्योंकि उसमें इनफ जगह नहीं थी। बहुत ज्यादा जो लोग थे वो बढ़ गए थे, तो उसमें नमाज पढ़ने की शायद जगह नहीं थी। सो ही एक्सटेंडेड द सेम मॉस्क इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू वन। सो दिस शोज दैट सिरी रिमेन्ड, सो जो सिरी है वो एक इंपीरियल कैंप, जहां पे जब जो नया रूलर है, नया सुल्तान है, वो सिरी में रह रहा है, बट एवरी अदर वे, एवरी इन एवरी अदर सेंस, द ओल्ड दिल्ली, द शहर was able to retain its importance. It remained commercially very very important.
It remained a place where a lot of traders would be coming, and it was more important even than the Kilokhari or the शहर-ए-नौ. शहर-ए-नौ तो मतलब जो पुराना शहर था, ओल्ड दिल्ली कौन सा था? कुतुब मीनार वाली दिल्ली. और नया शहर कौन सा था? जो किलोखरी वाला शहर, जिसकी हमने बात पिछली क्लास में करी है. तो शहर, नए शहर से भी, शहर-ए-नौ से भी, और सिरी से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों जगहों से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी भी जो था वो कुतुब दिल्ली ही थी. So Qutb Delhi is, remains the place which is very, very important. That is also the place, as I've said earlier, is where the grain market will continue to be. And both Alauddin Khilji and his successor, जिनकी मैंने बात करी थी, कुतुबुद्दीन मुबारक जो हैं, उनका जो पैलेस है वो सिरी की फोर्ट्रेस के बाहर होगा. बट जो ये बात हमको इब्न बतूता भी बताते हैं, that how the palace had been built by Alauddin Khilji इन आउटसाइड द सिरी फोर्ट्रेस, की सिरी की फोर्ट्रेस के बाहर अलाउद्दीन खिलजी का घर है, जहां पैलेस है, महल है. एंड ऑल्सो बट नॉनदलेस शहर रिमेन्ड वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ तक कि जो अभी तो तुगलकाबाद इस्टेब्लिश होगा, और उसके बाद मोहम्मद तुगलक जो आएंगे, जो जहापना बनाने की कोशिश करेंगे. और फिर कैसे हमें इब्न बतूता बताते हैं कि वो जहापना बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक भी आकर इस ओल्ड दिल्ली में रहेंगे कुछ टाइम तक के लिए. सो उनका व्हाट वाज द विजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन नेक्स्ट क्लास. घियासुद्दीन का तुगलकाबाद और मोहम्मद बिन तुगलक का जहापना is the two things that we are going to talk in the next class. Okay, I think I've exceeded the time which was given to me, so I will stop here. If you have any further questions, please ask me in the Q&A section. Otherwise, we are done with the class for today. बच्चे, पूरे कोर्स, कोई जब किसी ने किताब लिखी होगी ना कि मुझे दिल्ली के लिए किताब, दिल्ली के ऊपर किताब लिखनी है, तो एक टाइम पीरियड सोच के लिखी होगी कि मुझे अलाउद्दीन खिलजी की सीरी के ऊपर किताब लिखनी है, दिल्ली सल्तनत के टाइम की दिल्ली पे किताब लिखनी है. कोई भी ऑथर, मैं भी अगर लिखूंगा या आप भी अगर लिखेंगे, तो आप एक टाइम पीरियड चूज करेंगे, मुझे इस शहर के इस टाइम पीरियड के बारे में किताब लिखनी है. वो ये सोच के नहीं लिखेंगे कि आने वाले टाइम में दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कोर्स स्टार्ट करने वाला है, तो मैं इसके ऊपर एक किताब लिख देता हूँ. So there is no one book which is sufficient for all the topics that are being covered in this paper. That one book is your SOL material. लश्कर जो है वो आर्मी को कहा जाता है. आर्मी is known as लश्कर. Yes, I am in the WhatsApp group जो इंग्लिश ऑनर्स का मॉडर्न हिस्ट्री का ग्रुप है, दिल्ली थ्रू द एजेस, जिसका मैंने लिंक शेयर किया है, मैं उसमें हूँ. Okay, I'll change the setting. Any other question? Otherwise, I'm done. Thank you. Sir, if you're there, you may end the class. But the class recordings shall be available on your dashboard, and I think DU also has, SOL also has a YouTube page. तो YouTube पे भी उनका चैनल है जहाँ पे वो अपलोड करते हैं, तो आप वहां से देखिए, नहीं तो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल हो जाएंगे. SOL की वेबसाइट पे अपलोड करते हैं लेक्चर्स, सो फ्रॉम देयर यू कैन चेक. बट थोड़ा टाइम लगता है, जैसे रिकॉर्ड हुआ लेक्चर उसी टाइम नहीं डाल पाते हैं, एग्जाम से पहले अपलोड हो जाएंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा. SOL के एडमिन स्टाफ को भी, उनके जो कंप्यूटर टीम है उसको भी काम करने में, लेक्चर्स को एडिट करने में, फाइल साइज छोटा करने में, अपलोड करने में, दिस टेक सम टाइम. तो बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं, लगभग हर सब्जेक्ट की क्लास चल रही हैं, सो उनको इतनी सारी क्लासेस को देखना होता है, so it takes some time, but be patient, all these lectures will be available, and by that time you continue to read all your material. Okay, I think I'll leave. Thank you for being here.